Uh, Good evening, everyone. So, as from the previous class, see, we already know, first of all, this one, omega equals to omega naught plus alpha t, omega square is omega naught square plus 2 alpha theta, and theta equals to omega naught t plus half alpha t square. And the relation between linear velocity, angular velocity, linear relation between linear acceleration and angular acceleration. ঠিক আছে যাও না করেছি আমি এখান থেকে বাইরেই বলবো বুঝলে अच्छा आप देखो जस्ट इमेजिन हाँ तुम लोग बचपन में मम्मी पापा को कितना परेशान किए हो अच्छा देखो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 कि in a circular motion okay a particle move in a circle with constant angular velocity omega about the point P. This is the point P here. From suppose A to B, it move. So angular velocity is omega about the point P on its circumference. The angular velocity of the particle about the center of the circle is. So ये है center. About the center of the circle, angular velocity क्या होगा? So basically, let angular velocity about the center is omega c, and angular velocity about the point P, which is on the circumference, is P. So basically, here you have to find out the relation between omega c and omega P. So very simple. If we consider, first of all, let this angle is theta. So what about this angle? 2 theta, yes or no? Yes or no? Yes, sir. So we can say angular velocity with respect to P, that is angle per unit time. So angular velocity with respect to C, that is angle per unit time. And we all know the angle with respect to the circumference is double with respect to the center. We know this relation from class 10. So we can say 2 omega P, that is the relation between angular velocity with respect to the center and with respect to the circumference P. This is the one question, question number 1. Another question, question number 2. A wheel A having radius 10 centimeter is coupled by a belt B to a wheel C of radius 30 centimeter as shown in the figure. So two wheel we have, wheel A and wheel C. This is wheel A. This one is wheel C, which is coupled by a belt B. Okay. The radius of wheel A is 10 centimeter. The radius of wheel C is 30 centimeter. It is given. Wheel A increases its angular speed from rest at uniform rate of 1.57 radian per second square. So angular acceleration of a wheel A is given 1.57 radian per second square. Determine the time for wheel C. You have to find out the time for wheel C to reach a rotational speed of 100 rpm, assuming that the belt does not slip.
I just want to repeat the question. दो wheel है A and C. The radius of the two wheel 10 centimeter and 30 centimeter. These two wheel connected by a belt. Belt does not slip. That means, what do you mean by that? That means the speed of A, speed of B and speed of C are equal. तुम लोगों में से यहाँ पे शायद सब कोई साइकिल चलाया है. अगर साइकिल नहीं भी चलाया है तो साइकिल देखा जरूर है. साइकिल में फ्रंट व्हील, बैक व्हील, फ्रंट एक्सल, बैक एक्सल एंड द चेन. जब एक साइकिल चलता है तो फ्रंट एक्सल, बैक एक्सल एंड चेन एक दूसरे के साथ सेम स्पीड में घूमता है. अगर सेम स्पीड में नहीं घूमेगा तो पहला वाला चक्का बाहर चला जाएगा, ज्यादा स्पीड से निकल जाएगा, पीछे वाला चक्का कम स्पीड से पीछे रह जाएगा और तुम बीच में रह जाओगे. सो विच इज नॉट पॉसिबल. मतलब सब एक साथ हम साथ साथ है चलता है. दैट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ ए is equals to velocity of B is equals to velocity of C. इसी को कहता है does not slip. मतलब तीनों का सेम स्पीड होगा. अब बोला है it is starting from rest. What do you mean by rest? माने for everyone initial angular velocity is 0 and you have to find the time when this 0 become achieve 100 rpm for C, for wheel C, but angular acceleration C का नहीं A का दिया हुआ है. अगर angular acceleration A के जगह पे angular acceleration C का देता तब तो हम लोग डायरेक्ट निकाल देता. लेकिन यहाँ पे angular acceleration A का दिया है लेकिन final angular speed C का पूछा है. So that means first of all we have to correlate between A and C कि A and C का बीच में angular acceleration का angular speed का क्या relation है. From the previous class, see, we know that just here, see, just here. I think all of you remember V equals to R alpha, R omega, sorry, V equals to R omega. V is the linear speed, R is the radius, omega is the angular speed. So I can correlate it here. And on that basis, I can say कि for A, omega A into radius of the wheel A is equals to omega C for wheel C, radius of the wheel C. We know the radius of the wheel C 30, we know the radius of the wheel A 10. So we can write omega A into 10, that is omega C into 30. That means omega A is 3 omega C. That is the relation between omega A and omega C. Why we need that? Because alpha is given for A and they ask the omega for C. Now, as you know the alpha of A and you know the relation between omega A and omega C, now we can say when omega C achieve 100 revolution, that means in that time, same time, omega A achieve the 3 into omega C, mane 300 rpm. Yes or no? At the same time, when omega C achieve 100 rpm, at the same time omega A achieve 3 times, that is 300 rpm, because small wheel ज्यादा स्पीड, लार्ज व्हील कम स्पीड. इसलिए तुम लोग देखना, तुम लोग जो गियर साइकिल में जो गियर चेंज करते हो, गियर चेंज में होता क्या है? गियर चेंज में कुछ नहीं होता है, व्हील का खाली चेंज होता है. मतलब एक्सेल का छोटा बड़ा एक्सेल में चेंज होता है. छोटा बड़ा एक्सेल में चेंज होने से क्या होता है कि तुम्हारा स्पीड का डिफरेंस आता है. मतलब तुम्हें अगर कम पैडल करके ज्यादा स्पीड चाहिए तो बड़ा चक्का में जाएगा, ज्यादा पैडल करके कम चाहिए मतलब ज्यादा घुमाओ धीरे धीरे जाएगा तो छोटा चक्का में जाना पड़ेगा. दैट इज द गियर शिफ्टिंग. सो ओमेगा A equals to 300 rpm and we can convert this rpm into radian per second. So we know one revolution, rpm revolution, one revolution is 2 pi radian and minute mane 60. So I can say that is 10 pi radian per second. जब मुझे ओमेगा 10 पाई रेडियन पर सेकेंड होगा,
So automatic omega c 100 rpm ho jayega. Now we can use omega a, that is omega a initial plus alpha at, matlab for a, because we know that a alpha a, we know that it's starting from rest. Omega naught a 0, alpha is given 1.57, and you have to find out the time, and omega a is 10 into 3.14. So my time is 10 into 3.14 by 1.57, that is 20 seconds. Yes or no? Everyone, yes or no? Please respond. Is it okay? Yes, sir. Okay. After that, if it is okay, next very important theorem, next very important theorem, next very important theorem, very important theorem. Prove that centripetal force F equals to mv square by r acting towards the center in case of uniform circular motion. Uniform circular motion. What do you mean by uniform circular motion? Your omega is constant, mane alpha is 0. Uniform speed, this is uniform circular motion. Mane uniform circular motion mane angular speed remain constant. That means omega remain constant. Uniform circular motion. Okay, so this proof is very important. This proof is very important. Okay, if you give your exam, which is not objective, which is subjective type question, I can give you guarantee that examiner must give you that question. Okay, so that much important that question is, especially in your theoretical question. So for that, we start. Let a particle of mass m moving with constant speed. What do you mean by speed? My what do you mean by constant speed? My motion is uniform. Moving with constant speed, that means I can say in a uniform circular motion. Uniform. ठीक है? Constant speed का मतलब ये हो गया कि motion is uniform circular motion. On a final velocity at any point, my speed is remain same. Yes or no? But my velocity is different because its direction is different. Everyone, yes or no? Now, suppose this is my circle. This is the initial point, and this one is the final point. So this is A point, this is B point. Initially, the particle is in this direction V1, and then at B, it will be in this direction V2. During that time, let the angle is theta, and this one is the how much arc length? S. In how much time? Del t time achieve this arc length. Okay. So from this key, as it is initially in this direction, then in this direction, if I draw this is my initial position. Let it be OP1. The velocity is V1, and this is my final position V2. So if we make this, it will be a triangle,
and this angle is also theta. So what I can say, first of all, let in time dt, the particle travel A to B in A to B. Okay, so arc length AB, which is S, equals to speed into time, because we know speed equals to distance by time. Now from triangle OP1 P2, this is a triangle. From triangle OP1 P2, by triangle rule of vector addition, by triangle rule of vector addition, what we can say, कि OP1 vector plus P1 P2 vector is equals to OP2 vector, which means P1 P2, that is OP2 minus OP1, that means V2 minus V1, and V2 minus V1, P1 to P2, see the direction, huh? See the direction. Which direction? Towards the center. So I can say this V2 minus V1 towards the center. So we can say P1 minus P1 P2, that is the change in velocity, and in which direction? Towards the center. So what I can say is that is equals to change in velocity towards the center. Now in the triangle OAB, although it's an arc length arc triangle, and in the triangle OP1 P2, that OP1 P2 triangle is formed from this arc triangle. So by comparison, now comparing triangle OAB, which is an arc triangle, and OP1 P2, if we consider this two triangle, so this is my arc length and this is, so if we compare them, how we compare them, suppose I am comparing this one and this one. So what we can write first, okay, P1 P2 by the arc length, that is AB arc, and that is equals to any one. Suppose we are taking this one and this one, this radius is R. So what we can say, OP1 by OA. So that means P1 P2. What do you mean by P1 P2? Change in velocity. What do you mean by AB? AB is the arc length, which is velocity by at speed into time. What do you mean by OP1? Velocity. What do you mean by OA? Radius. So what we can say, del V by del T. This is the velocity, and what is the magnitude of that velocity? See, the magnitude of that velocity is V. So what we can write, del V by del T, if we move in this side, V square by R, and what is the direction? Towards the center. So what we can say, acceleration, which is called centripetal acceleration, or sometimes called the radial acceleration, that is equals to change in velocity by time, which is equals to V square by R towards the center. So force, what do you mean by force? Mass into acceleration, centripetal or radial, that is mv square by R. Proof,
acting towards the center. Okay, acting towards the center. Okay, everyone. Everyone, is it okay? Hello. Am I audible? Anyone please respond? Kritika, Shagnik. Yes, sir. अच्छा, अब देखो इससे ये तो प्रूफ हो गया कि centripetal force is acting towards the center. So now important note, very important note, कि in a circular motion, that means in a circular motion, that means two type of acceleration is there. One acceleration is towards the center. Sometimes you can say centripetal, sometimes you can say radial. Another acceleration is acting tangentially, due to which, if the tangential acceleration there, that means tangential acceleration is r alpha. That means angular acceleration is there. That means the motion is not uniform. The motion is non-uniform. And the resultant of these two acceleration is the actual acceleration of a circular motion. The resultant of these two acceleration is the actual acceleration of a circular motion. That means in circular motion, acceleration, that is the radial acceleration or tangential acceleration, and radial acceleration or centripetal acceleration and tangential acceleration. So magnitude, that is the radial acceleration square plus tangential acceleration square. What do you mean by radial? Radial, sometimes called centripetal, whose value is v square by r. Just now we prove it here. And tangential, that we prove in the last class, previous class, dv by dt, which we can say r alpha also. I can show you that. See, here we prove that tangential acceleration v square by r. Sorry, not tangential, radial or centripetal, radial acceleration or centripetal acceleration v square by r, and tangential acceleration, you can see here, tangential acceleration, yes, see, the tangential acceleration v square by r omega dv by dt. So and if you suppose this angle as a theta, you can say acha, this one, what then we can say v square by r whole square plus dv by dt whole square, and tan theta, that is a radial by a tangential. So theta is tan inverse a radial by tangential. Okay, everyone, understand? Huh? Is it okay? Yes, sir. अब देखो इसके साथ साथ important information, which is very important. Important information. What is the important information? The important information is actually, so that means basically we see the two type of acceleration is there. One is the radial acceleration, one is the tangential acceleration. So case one, tell me what happened if my radial acceleration or centripetal acceleration is 0 and my tangential acceleration is also 0. What happened? Means which type of motion it is. See, circular motion only possible. I again repeat, this circular motion only possible when this radial or centripetal acceleration is present. If no radial or centripetal acceleration present, that means no circular motion. Until
centripetal acceleration or radial acceleration present, circular motion is not possible. Clear? So as in the first case, your radial or centripetal acceleration is 0, so no circular motion. So that means no circular motion matlab linear motion, and in linear motion, see, your acceleration of the tangential is also 0. On a tangential which is acting straight line, that is also 0. So which type of motion? Linear, uniform linear motion. What do you mean by uniform linear motion? कि particle move in a straight line with velocity constant, है ना? Uniform माने no change in velocity, linear माने straight line. Yes or no? Uniform का मतलब क्या? No change in speed or magnitude of the speed. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So this is my case 1. What about case 2? If my centripetal or radial acceleration is 0, but the tangential acceleration is not 0, that means it is linear motion but non-uniform. The velocity is variable. The speed is changing, either increasing or decreasing. So what we can write? Non-uniform linear motion. Satisfy everyone? Yes, sir. Now the third one, the most important one. देखो इतना एलाबोरेट करके तुम लोगों को सर्कुलर मोशन का ये सब बात कोई नहीं बताएगा. कहीं भी पढ़ते हो, किसी का भी नोट उठा के देख लो. Centripetal acceleration is non-uniform, not equals to 0, but the tangential acceleration is 0. What do you mean by tangential is 0? Tangential is 0 मतलब your speed of the velocity तो direction change होने से भी होता है, माने speed का change नहीं होगा, मतलब it's a uniform circular motion, right? देखो centripetal acceleration है not equals to 0 मतलब है, और velocity constant है, मतलब magnitude of the velocity constant है, तो कैसा मोशन हो गया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ ना? Yes or no? Yes or no? Hello? Is it okay? Student, please respond. If you have any doubt, you can tell me. Yes? বুঝতে পেরেছিস তো সবাই? Yes, sir. So it is called uniform circular motion. What do you mean by uniform circular motion? Uniform circular motion माने your alpha 0, that means omega is constant, माने speed remains same, no change in speed. अब देखो इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? देखो क्या क्या हो रहा है. इफ योर स्पीड इज रिमेन सेम, माने मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटीज रिमेन सेम, so I can say my kinetic energies remain constant. Yes or no? Because the speed is same, mass is same, kinetic energy is constant. Yes or no? अरे बाबा सर्कुलर मोशन हो रहा है, सब जगह पे सेम स्पीड है. यहाँ पे भी स्पीड v है, यहाँ पे भी स्पीड v है. वेलोसिटी अलग है क्योंकि इसका डायरेक्शन अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना. यस और नो? तो काइनेटिक एनर्जी हर जगह सेम. यस? Yes, sir. Yes, sir. So when the kinetic energy is constant, change in kinetic energy is 0, I can say. And always remember, in case of uniform circular motion, always remember work done in any uniform circular motion, any uniform circular motion is 0. Work done in any uniform circular motion is 0. Why? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो फोर्स का वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? F डॉट dr. तो कहीं पे भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फोर्स एंड वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, force and velocity at any point, force and velocity are perpendicular.
So as the force and velocity are perpendicular, so I can write it force dot displacement, that is v dt. That means f v dt cos 90 degree, and cos 90 is how much? 0. So my work done is always 0. समझ में आया? Is it okay? Yes. And one more thing, देखो बाकी सब में इतना कुछ नहीं होता है, तो समझ में आया सर्कुलर मोशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? सर्कुलर देखो, नॉर्मल मोशन में देखो क्या है, कुछ नहीं है. सर्कुलर मोशन में देखो कितना कुछ हो सकता है. And as the velocity, the direction is also changed. Change in momentum हमेशा final minus initial. So in terms of magnitude, what you can write? The root under final square, initial square, 2p final p initial cos theta. अब यहां से देखो इनिशियल और फाइनल का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. इनिशियल एंड फाइनल का मैग्नीट्यूड तो सेम है, क्यों? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. So if I am taking mv common, what we have 1 square minus 2 cos theta. That means mv 2 1 minus cos theta. Anyone tell me 1 minus cos theta, what is the formula? 1 minus cos 2 theta, tell me the formula. And 1 plus cos 2 theta, tell me the formula. बोलो जल्दी से, जल्दी जल्दी बोलो. क्या है, जल्दी जल्दी बोलो. अरे বল না, তাড়াতাড়ি বল কেউ, কত হয়? वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा, और ये होता है 2 cos theta. So here 1 minus cos to the 2 sin theta, यहाँ पे थीटा है तो थीटा by 2. So what you have, mv 2 into 2 sin theta by sin square, sorry, sin square theta by 2. So what you have, 2 mv sin theta by 2, that is change in momentum in case of uniform circular motion. I just give you one example. तब तुम्हें समझ में आएगा कि why I am giving you that shortcut. देखो, मानो एक क्वेश्चन दिया कि in case of uniform circular motion, find change in momentum. ये है इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन, एंगल इज 60 डिग्री. सो देखो हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन मोमेंटम, व्हाट इज द फॉर्मूला? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना. सो हम लोग लिखेंगे मैग्नीट्यूड मास mv स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर माइनस 2, बिकॉज दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर. या ऐसा अगर प्रॉब्लम है तो mv विथ नेगेटिव साइन cos 60 डिग्री. क्या होता है देखो तो, mv को बाहर ले लिया, 1 स्क्वायर माइनस 2 cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2. तो क्या हो गया, mv 1 + 1 - 1, दैट इज mv. ये सब नो. यहाँ पे देखो प्लस माइनस साइन लेने में तुमको गड़बड़ी हो जाएगा, लेकिन मुझे अगर ये फॉर्मूला याद है तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, देखो चेंज इन मोमेंटम 2 mv sin थीटा 60/2, तो 2 mv sin 30 कितना होता है, हाफ. देखो डायरेक्ट आया, बोलो आया कि नहीं.
Yes, sir. क्या एक तो गाना है ना, ओ माई क्या माई, क्या क्या बनाने लगा, सब भीख मांगने लग गया, ए माई ओ माई करके। अच्छा केस 4, केस 4 में क्या है कि इफ ए आर नॉट इक्वल्स टू 0 एंड ए टी नॉट इक्वल्स टू 0, तो क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. So as it is a non-uniform circular motion, so everything is changing. माने velocity change, magnitude, direction, kinetic energy is not remain constant. So change in kinetic energy is there. Work done is not zero. Change in momentum is zero. तो यहाँ पे कोई trick नहीं है. So trick नहीं है तो normal question they can give you the velocity for different position. ठीक है. अब देखो इसके ऊपर मैं बेस करके स्पेशली जो मैंने तुम्हें जो पहले जो ये जो बोला, देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है. आई एम गिविंग यू 2 क्वेश्चन, ठीक है, एंड 1 क्वेश्चन इज आस्क्ड इन आईआईटी, तो तुम समझ में आ ही रहा है कितना इंपॉर्टेंट है. इफ यू वांट टू राइट दिस फार्मूला यू कैन राइट इट फर्स्ट, दिस फार्मूला स्पेशली, हाँ, और ये दोनों भी लिख लो, अगर लिखना चाहे या स्क्रीनशॉट ले लो, देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. आई एम गिविंग यू 2 क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करो. ठीक है. Now I'm giving you the question. Okay, my first question is that question number 1 is not that much tough question, but little bit calculative, so you can use calculator. A motor car is traveling at 30 meter per second on a circular road. What do you mean by circular road? Circular motion. Circular road of a radius 500 meter. Radius, कितना? 500 meter. It is increase in speed at a rate of dv by dt, that is at 2 meter per second square. 2 meter per second square. इसका अच्छा, मेरा आवाज क्या साफ साफ तुम लोगों के पास आ रहा है? हेलो, am I audible properly? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. लेकिन उसका नेटवर्क बहुत ही स्लो है. मैं मुंडी हिलाता हूँ तो उसका 2 सेकंड बाद पता चलता है कि मेरा मुंडी हिला है. So the question is, what is the acceleration? This is that means basically they give you the tangential acceleration. From these 2 data you can find out the radial acceleration and then find out the acceleration. Find acceleration. So this is my first question. Second question, it's a very simple question, but you can use calculator. Second question is very lovely question, and this one is asked in IIT. And the question is that the kinetic energy of a particle moving along a circle of radius r depend on distance covered s as kinetic energy के साथ distance का relation है a square in a circular motion of radius r है. ठीक है, r रेडियस का एक सर्कुलर मोशन में काइनेटिक एनर्जी के साथ डिस्टेंस का रिलेशन है k इक्वल्स टू a स्क्वायर, वेयर a इज अ कांस्टेंट. ठीक है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ s. फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ s, माने इस इक्वेशन से मुझे फोर्स का वैल्यू निकाल के दिखाओ. ऑप्शंस आर as root under 1 plus s by r square. Option B 2as. हाँ, आवाज़ই শুনতে পাচ্ছি না আমি. লিখে বলতো, আমাকে চ্যাট কর. Two as 1 minus
s by r square লিখলি হ্যালো কি বলছিস বল হ্যালো এখানে এফটা কি ওটা জিজ্ঞেস করছে একটা ফোর্স s is the distance s হচ্ছে ডিসটেন্স আর k টা হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি সো কাইনেটিক এনার্জি আর ডিসটেন্সের মধ্যে কি রিলেশন হবে যে তোর ফোর্সের ইকুয়েশন এই চারটার মধ্যে কোনটা হবে মানে হাউ ইউ গেট ফোর্স ফ্রম দিস রিলেশন দিস ইজ দ্য মেইন কোশ্চেন ঠিক আছে সো আই গিভ ইউ 2 মিনিট ফর দ্যাট 2-3 মিনিট টু কোশ্চেন ফার্স্ট এটা হয়েছে সেকেন্ডটা হয়নি হ্যাঁ দ্য ফার্স্ট ওয়ান দেখো question number 1 acceleration that is the radial acceleration square plus tangential acceleration square radial acceleration is v square by r that is 30 into 30 by 500 so 9 by 5 and tangential acceleration is given 2 so what we can write 9 by 5 whole square plus 2 square which is nearly equals to 2.7 meter per second square. This is the first question. Second question is very beautiful question you can say. Second question के लिए देखो क्या है कि kinetic energy is given question number 2. Kinetic energy is given half kinetic energy is half mv square that is a square. तो यहाँ से मुझे v square क्या मिलेगा v square is 2a square by m which means v is equals to root under 2a by m into s. Yes or no? So my centripetal acceleration is what? Yeah, radial acceleration is what? V square by r that is 2a by m s ka whole square by r that is 2a s square by r mr. Yes or no? Everyone satisfied? Yes, sir. And tangential acceleration that is dv by dt but unfortunately no time is here so I can convert it dv by ds into ds by dt. So then what we have velocity dv by ds. Now v though we have directly but but dv by ds if we want to differentiate this one so देखो 2a by m is remain constant 2a by m remain constant ds by ds what do you mean by ds by ds 1 so what you have 2a by m that is dv by ds so overall ये 80 कितना हो जाएगा v that is 2a by m into into s into dv by dt that is 2a by m. So क्या मिलेगा 2a by m into s. So now overall acceleration that is the centripetal acceleration square plus tangential acceleration square. So what is my force? My force is mass into acceleration that is mass into centripetal acceleration. My centripetal acceleration is how much? This one 2a square by mr whole square and tangential acceleration is this much 2as by m whole square. तो यहाँ से मैं देखो क्लियरली m तो बाहर है ही 2as by m को भी बाहर कर सकता हूँ सो मेरे पास क्या बचा यहाँ से एक s बचा यहाँ से एक r बचा तो s by r होल स्क्वायर और यहाँ से मेरा एक बचा
और ये m कैंसिल हो गया. So my value is 2as root under s by r whole square plus 1. Now I can see the options. Options is ये देखो 2as 1 plus a square by r square. B is the right option. Yes or no? Everyone, yes or no? Hello? Yeah. अच्छा. After that, अब हम लोग एक पार्ट और था वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. Next is today we start applications of circular motion. Application of circular motion. तो ये applications of circular motion में पहला वाला जो है, पहला वाला है by friction only. By friction only. तो इस by friction only के लिए first of all I want to show you कि देखो जैसे this is my circular track. Okay, in this circular track, if a particle move like this circular turn, if the particle move in this circular turn, so first of all, in which direction the tendency of skidding, बाहर की तरफ जाएगा. जब ये ऐसे टर्न लेगा तुम किधर जाओगे? बाहर की तरफ जाओगे. And the track is this one, माने your mg is acting downward, normal reaction is upward, tendency of motion बाहर की तरफ. तो इस बाहर की तरफ मोशन का टेंडेंसी को कौन रोकेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर. यस और नो? जब ये सर्कुलर टर्न ले रहे हो तुम्हारा टेंडेंसी बाहर की, तो तुम जब बाइक चला के सर्कुलर टर्न लोगे, अगर तुम स्किड करोगे किधर जाओगे? बाहर की तरफ जाओगे ना. टर्निंग में किधर जाते हो? बाहर की तरफ. तो फ्रिक्शन किधर लगता है? अंदर की तरफ. ये फ्रिक्शन तुम्हें क्या कर रहा है? स्किड होने से रोकता है. मतलब अगर तुम्हारा फ्रिक्शन स्किडिंग से ज्यादा है तो तुम बच जाओगे. अगर फ्रिक्शन से स्किडिंग ज्यादा हो गया तो तुम बाहर की तरफ चल जाओगे. मतलब तुम्हारे घर पे तुम्हारा फोटो लग सकता है. ठीक है. तो यहाँ पे अगर मैं सर्कुलर टर्न में स्पीड लिमिट दूंगा तो मिनिमम स्पीड लिमिट दूंगा कि मैक्सिमम स्पीड लिमिट दूंगा? एनीवन प्लीज टेल मी. सर मिनिमम. अरे मिनिमम कैसे? मैक्सिमम सर्कुलर टर्न में मैक्सिमम मिनिमम तो कोई पैदल भी जा सकता है, तो वो थोड़े गिर जाएगा. मैक्सिमम दूंगा कि मानो 15 किलोमीटर पर आवर मेरा मैक्सिमम है, तो 15 की जगह 16 में जाओगे तब ना तुम स्किड करोगे. सो दैट इज योर मैक्सिमम स्पीड लिमिट. इफ यू मूव मोर देन दैट तो क्या होगा तुम्हारा? तुम गिर जाओगे. जैसे हमारा इंडियन रोड में जो लिखा रहता है कि सपोज 60 किलोमीटर पर आवर, दैट इज मिनिमम स्पीड लिमिट और मैक्सिमम स्पीड लिमिट. 60 है Maximum. मतलब 60 के ऊपर नहीं चलाना है, 60 के नीचे चलाना है. और कुछ कुछ फॉरेन में ऐसा लेन है वहां पे लिखा हुआ है मानो 60 to 120. तो 60 से 100 के बीच में तुम्हें मेंटेन करना है. 60 से नीचे नहीं आना है. ठीक है. और 120 से ऊपर नहीं जाना है. तो यही मैं बताना चाह रहा था. और यहाँ पे याद रखना mg is acting downward, frictional force upward, क्योंकि मैं जो तुम लोगों को ड्रॉ करके दिखाऊंगा वो ये दिखाने वाला हूँ ड्रॉ में. तो इसके हिसाब से मैं mg को डॉटेड लाइन से डाउनवर्ड करूंगा, नॉर्मल रिएक्शन को अपवर्ड करूंगा. ठीक है. तो ध्यान से देखो, ये मेरा सर्कुलर ट्रैक है. ये दिखने में यहाँ पे लग रहा है हॉरिजॉन्टल, बट ये है, अरे ये है इनर. सर्कुलर होगा, हालांकि सर्कुलर हुआ नहीं उतना. तो देखो कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर गिव यू द इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस. इफ एग्जामिनर गिवन यू द इनर एंड आउटर रेडियस, हमें हमेशा क्या करना है? एवरेज रेडियस लेना पड़ेगा. सो हाउ आई गेट दैट एवरेज रेडियस? हाउ आई गेट दैट एवरेज रेडियस? आर, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एवरेज रेडियस इज inner radius plus outer radius by 2. Now if we put a block here,
mg is acting downward, normal reaction is upward, and frictional force acting down towards the center. So हमेशा मुझे याद रखना पड़ेगा frictional force is greater than equals to centripetal force. मेरा frictional force क्या हो गया, mu r, और centripetal force क्या है, mv square by r. r क्या है, radius of the track. So r is what, r is mg, normal reaction. So mu mg, mu mg greater than equals to mv square by r. M cancel. So v square less than equals to mu rg, v less than equals to root under mu rg. इक्वलाइज जब मैं साइन लूंगा तो मैं क्या लूंगा, मैक्सिमम. तो मेरा v जो है, v मैक्सिमम स्पीड क्या लिखा रहेगा, रूट अंडर म्यू आर जी. अब देखो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस देगा, क्वेश्चंस डायरेक्टली देगा. क्या क्वेश्चन, किस तरह का क्वेश्चन देगा कि एक सर्कुलर टर्न है जिसका रेडियस है 20 मीटर, और भी ज्यादा दे सकता है, म्यू का वैल्यू है 0.2. तुम्हें बोलेगा कि व्हाट इज द स्पीड, मैक्सिमम स्पीड. सो मैक्सिमम स्पीड हो जाएगा कुछ नहीं, 0.2 इंटू 20 इंटू 10. तो ये कितना हो गया, रूट अंडर 40 मीटर पर सेकेंड. ये सुन लो. एवरीवन क्लियर? স্যার ওই ফার্স্ট লাইনে এফসিটা ওটা কি লিখেছো? সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স, সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সের চেয়ে ফ্রিকশনাল ফোর্স বড় হবে, কারণ ফ্রিকশনাল ফোর্সটা ভেতরের দিকে লাগছে আর টেন্ডেন্সি বাইরের দিকে, তাই না? মানে সেন্ট্রিপিটাল আর সেন্ট্রিফিউগাল, সামটাইম if the force is acting towards the center, centripetal, if it is acting outside the centrifugal, এখানে centrifugal force কে frictional force balance করছে, because your tendency of motion is outside. Okay, Yes sir. now the second one is, second topic is, মানে second application is banking of road. Very very important. Banking. Banking of road. KING, banking of road. ब्रैकेट में विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन. पहला केस में मैंने देखा सर्कुलर टर्न में अगर फ्रिक्शन हो तो क्या होगा. दूसरा केस में अभी हम देखेंगे कि मेरा बैंकिंग ऑफ रोड करेंगे और फ्रिक्शन नहीं होगा. बैंकिंग का मतलब क्या है, बैंकिंग का मतलब ये है कि ये जो मेरा सर्कुलर टर्न था जिसमें फ्रिक्शन था, तो बाहर की तरफ जा रहा था, फ्रिक्शन अंदर की तरफ आ रहा है. मैं अब सर्कुलर टर्न को बिना फ्रिक्शन का हम लोग क्या किया, ऐसे टर्न कर दिया. तो ये जो टर्न किया, अब ये ट्रैक ऐसे 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 टर्न है, ठीक है, मतलब ये टर्न नहीं है, इसके साथ ये थोड़ा बैंकिंग किया हुआ, मतलब एक तरफ झुका हुआ एक तरफ ऊंचा. तो इस एक तरफ झुका हुआ एक तरफ ऊंचा हुआ के कारण मुझे टुवर्ड्स द सेंटर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, आई कैन इंक्रीज द स्पीड. मतलब मैं सर्कुलर टर्न में ज्यादा स्पीड में मूव कर सकता हूँ. और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि बैंकिंग ऑफ रोड विद फ्रिक्शन, क्योंकि कोई भी रोड विदाउट फ्रिक्शन नहीं हो सकता है. हम लोग इमेजिन किया कि अगर रोड में फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ रोड है, लेकिन मैं बैंकिंग कर दिया हूँ, तो उसका मुझे क्या एडवांटेज मिलेगा. आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल इसका, कि तुम लोग ओलंपिक में देखा होगा जब साइकिल रेसिंग होता है तो स्टेडियम के अंदर वुडन फ्लोर में ऐसे ना ऊंचा किया हुआ रहता है. तो जो साइकिलिस्ट है ओवरटेक करने के लिए स्पीड बढ़ाता है, वो क्या करता है, ऊपर चला जाता है. तो ऊपर जब जाता है उसको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, जिसके कारण वो क्या करता है, स्पीड वो बढ़ा के कर सकता है. नीचे में वो स्पीड नहीं बढ़ा सकता, नीचे में स्पीड बढ़ाएगा तो वो गिर जाएगा, क्योंकि वो पूरा सर्कुलर है. ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को अभी हम लोग यूज करेंगे, बैंकिंग ऑफ रोड. और नेक्स्ट दिन जो हम लोग पढ़ेंगे वहां पे हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड विद फ्रिक्शन, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, डेथ वेल, सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मतलब थर्सडे को. सो द थर्सडेज क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट मिस इट. सो ये मेरा रोड को मैंने थोड़ा सा उठा दिया, विद मेरा वही है, अब मेरा रोड ऐसा हो गया है और सेंटर यहाँ पे है.
सो ये मेरा इनर रेडियस था रोड का, ये मेरा आउटर रेडियस था रोड का। हमें हमेशा मिडिल पॉइंट को लेना है, मतलब मेरा जो एवरेज रेडियस होगा हमेशा a plus b/2। either they give you the radius of the road is r or they give you the inner radius and outer radius। यहाँ पे एक एडवांटेज है कि अगर वो इनर एंड आउटर रेडियस दे रहा है, मतलब वो तुमको रोड का विड्थ बोल रहा है, और अगर तुम्हें हाइट पता है रोड का, सो दिस इज द वन वे यू कैन फाइंड आउट द इंक्लाइनेशन ऑफ द रोड। सो ये भी एक तरीका है इंक्लाइनेशन ऑफ द रोड दे देने का। tan थीटा दैट इज हाइट बाय विड्थ, कभी कभी डायरेक्ट विड्थ बोल देता है, कभी कभी वो लेंथ एंड ब्रेथ दे देता है, दैट मीन्स b minus a। now if we put a block here, या block, vehicle, anything, so first of all my mg is always acting downward and normal reaction normal to the surface r, और यहाँ पे मुझे एक एक्स्ट्रा ये एंगल थीटा मिलेगा। कैसे मिलेगा देखो, ये एंगल थीटा है तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि अदरवाइज यू ऑल आर कंफ्यूज्ड। तो ये जो है मेरा, ये है r cos थीटा, और इसका जो परपेंडिकुलर है that is r sin theta which is towards the center। so very obvious, upward force balance the downward force, so I can say r cos theta, that is the upward force balance the weight, and r sin theta is acting towards the center। ये मेरा center है, towards the center। so towards the center मतलब क्या, मुझे एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रहा है सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए, that is the centripetal force। so मेरा r sin theta is the mv square by r। r क्या है, radius of the track। so dividing 2 by 1, what we can write, r sin theta by r cos theta, that is r sin theta by r cos theta, that is mv square by r by mg, mm cancel, so we have v square by rg, so v square, that is rg tan theta, so v equals to root under rg tan theta। yes everyone। यस सर। अब देखो इसके ऊपर भी एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, हाँ, और बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सर्कुलर मोशन का मेन चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे। तो देखो एक छोटा सा जस्ट क्वेश्चन दे रहा है, वो लोग मानो बोल दिया कि विद height and width ratio is 1:2, height and width ratio, d is the width, is 1:2, a radius of the track is mano 20 meter, find the speed in the banking of road। so v equals to, देखो tan theta सबसे पहले वो दे दिया है height by width 1:2 माने 1/2 माने 0.5। so हम लोग रेडियस दिया है 20, g दिया है 10 and tan theta दिया है 1/2, that means क्या हो गया 100, that means 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दिया क्वेश्चन का, कैसे करके क्वेश्चन को दे सकता है ना? यस और नो? यस सर। बाकी तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे, डिफरेंट फॉर्मेट देखेंगे। सर्कुलर मोशन का सेंट्रीपिटल फोर्स का कुछ चीज बताना है। सो ये जो है आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग हियर, ठीक है।